Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6th class, Assalamu alaikum. Today we are going to read lesson number 6, A Kind Deed, written by one of the young doctors, Margaret Lees. In this particular lesson, she describes an incident that has happened on a particular platform in which a medical student, Sarah, helped out an injured little girl. Let's start reading it. Take out your books and put your fingers on the text. Remember, first of all, I will read out paragraph number 1 in order to make you pronounce the words accurately, and then we would start translating it sentence by sentence, first in simple English and then into Urdu. Now, I am going to start reading from the first line. So, put your fingers on the text. As Sarah hurried down the railway platform, there was a sudden commotion near her. A child had trapped its hand when the carriage door swung to and was screaming with pain and fright, while the mother and the granny and a friendly porter clustered round, not knowing what to do for the best. In this way, we have read paragraph number 1. Now, I am going to translate it sentence by sentence. As Sarah hurried down the railway platform, there was a sudden commotion near her. In this first particular sentence, the writer wants to tell us, as Sarah stopped hurriedly on the platform, she noticed some sort of commotion or stir around her. जैसे ही सारा तेज़ी से रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुकी, उसके इर्द गिर्द अफरा तफरी फैल गई या उसके गिर्द एक हंगामा बरपा हो गया। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है, आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए हों, जब अराइवल ऑफ ट्रेन और डिपार्चर ऑफ ट्रेन होता है तो हमें एक किस्म की एक्टिविटी नज़र आती है। लोग बड़ी तेज़ी से इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी असना में कभी न कभी कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है। यू और योर पेरेंट्स माइट हैव नोटिस्ड इट। सेंटेंस नंबर 2, A child had trapped its hand when the carriage door swung to and was screaming with pain and fright, while the mother and the granny and a friendly porter clustered round, not knowing what to do for the best. In this long sentence, the writer wants to tell us the hand of a child got stuck into carriage door when it swung to, and she started crying with pain and fright, while the people who were gathered around her, incorporating her mother, her grandmother and a friendly porter, they did not understand what should they do at that very moment. जैसे ही रेलवे बोगी का दरवाज़ा घूमा, बच्ची का हाथ दरवाजे में फंस गया और वो दर्द और खौफ के मारे चिल्लाने लगी, जबकि इसी असना में जो लोग उसके गिर्द जमा थे, उसकी अम्मी, उसकी दादी अम्मी और एक खुश मिजाज कुली जो उसके गिर्द जमा थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। Now I am getting aside so that you may write difficult words and their meanings on your book. Take out your lead pencil and start reading them. Hurried down, तेज़ी से रुकना, उतरना. Sudden, अचानक, at once. Commotion, stir, हंगामा. Trapped, got stuck, फंस गया, हाथ का फंस जाना. Carriage, बोगी, ट्रेन की बोगी. Swung, घूमा. Screaming, चीखो पुकार करना, रोना, चिल्लाना. Fright, खौफ, हॉरर. Friendly, खुश मिजाज. Clustered, जमा थे.
and I forgot to write one word, and that was porter, and it's mean coolie. Now I am going to read paragraph number 2. So put your fingers on the text. Sarah hesitated a moment, then put down her luggage. She was shy, and it took courage to go to the little group and offer help. They quickly stood aside for the tall, fair girl in the pretty green shower-proof coat. She had a look at the trapped hand. Now we are going to translate it sentence by sentence. Sarah hesitated a moment, then put down her luggage. At first Sarah was hesitating, then finally she decided to help the little injured girl and put her luggage down. सारा एक लम्हे के लिए हिचकिचाई और फिर उसने अपना सामान नीचे रख दिया. She was shy, and it took courage to go to the little group and offer help. She was shy at that moment, and somehow she managed to offer the group for her help. वो शुरू में थी तो वो शर्मीली, और हिम्मत करके उसने उन लोगों को अपनी मदद की पेशकश कर डाली. They quickly stood aside for the tall, fair girl in the pretty green shower-proof coat. The crowd which was gathered around that injured girl, they quickly got aside and let Sarah to help the injured child. वो लोग सब्ज बरसाती में मलबूस उस खूबसूरत और लंबी लड़की के लिए एक जानिब हो गए ताकि वो उस ज़ख्मी लड़की का इलाज कर सके. She had a look at the trapped hand. Sarah glanced at the injured, wounded hand. सारा ने ज़ख्मी हाथ को देखा. Now I am getting aside so that you may write meanings of difficult words and their meanings on your books. Hesitated, हिचकिचाई, luggage, साजो सामान, shy, शर्मीली, courage, हौसला, pretty, खूबसूरत, shower coat, बरसाती. Now we are going to read our last and third paragraph for today's lecture. The skin is dented and bruised, but the fingers move freely, so I don't think any bones are broken. The best thing is just to bathe it gently and keep it covered. I am afraid this nail will go black though. If it hurts a lot, please take her to the doctor. You see, he can easily relieve the pressure under the nail, and it makes the finger comfortable at once. Perhaps we could use a clean hanky as a bandage now. Now we are going to translate it sentence by sentence. The skin is dented and bruised, but the fingers move freely, so I don't think any bones are broken. When Sarah noticed that trapped hand, she remarked that the hand had scratched and bruised, but the fingers were moving freely, so she suggested that no bone in the hand was broken. सारा ने कहा कि बच्ची के हाथ पर दंदाने पड़ गए हैं और हाथ ज़ख्मी हो गया है, इसमें खराश आ गई है, लेकिन उंगलियां आसानी से हरकत कर रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हाथ की कोई हड्डी टूटी है. जिन लोगों का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर उनका हाथ इंजर्ड हो जाता है और जैसे ही वो लोग एमरजेंसी में जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है, यंग डॉक्टर जो होते हैं, वो पेशेंट को हाथ हिलाने का कहते हैं. अगर उसकी फिंगर्स फ्रीली मूव कर रही हैं, इसका मतलब है कि हाथ की कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई. अगर ऐसा नहीं है, कोई फिंगर नहीं मूव कर रही, इसका मतलब है या कोई स्लाइट फ्रैक्चर या सीवियर फ्रैक्चर हुआ है. The best thing is just to bathe it
gently and keep it covered. सारा ने कहा बेहतर ये होगा कि हाथ को आहिस्तगी के साथ नरमी से धोया जाए और इस पर मरहम पट्टी कर दी जाए, इसको ढांप दिया जाए. I am afraid this nail will go black though. मुझे डर है कि इस हाथ का जो नाखून है वो काला पड़ जाएगा. जब लोगों को फिंगर पे नाखून पे चोट लगती है तो फर्स्ट टाइम तो वो नीला पड़ जाता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट टर्न्स इनटू ब्लैक कलर. If it hurts a lot, please take her to the doctor. Sarah suggested that in this sentence, if it keeps paining, then you should see your doctor. अगर दर्द बढ़ जाता है तो मेहरबानी करके इसे डॉक्टर के पास ले जाइएगा. You see, he can easily relieve the pressure under the nail and it makes the finger comfortable at once. आपके देखते ही देखते वो नाखून के नीचे से दबाव को कम कर देगा और इसकी उंगली को फ़ौरन ही आराम आ जाएगा. Perhaps we could use a clean hanky as a bandage now. सारा ने कहा कि शायद इस वक्त we could use a handkerchief as a bandage now, कि शायद हम इस वक्त एक रुमाल को पट्टी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. Now I am going to discuss first 3 questions with you. Open page 41. Question number 1 is, what happened to the child? How did she react? Remember, these questions are relating to our text which we have studied just now. बच्ची के साथ क्या हुआ था और उसने कैसे रिएक्ट किया था. In fact, question number 1 has 2 questions in it. Part 1 is what happened to the child. बच्ची के साथ क्या हुआ था. हम जानते हैं उसका हाथ कैरेज डोर में फंस गया था. Her hand got stuck in the carriage door. How did she react? उसने कैसे रद्द-ए-अमल दिया. She cried with pain and fright. वो खौफ और दर्द के मारे चिल्लाई थी. Question number 2. Why did Sarah hesitate before she offered help? सारा ने मदद की पेशकश करने से पहले वो कुछ क्यों हिचकिचाई थी. हम जानते हैं वो शर्मीली थी और उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था. She was shy and not experienced in treating such an injuries. Question 3 is, why did Sarah think that no bones in the hand were broken? How did she suggest that the hand should be treated? सारा को कैसे पता चला था कि हाथ की कोई हड्डी नहीं टूटी है. हमने इसमें एक सेंटेंस पढ़ा है, द फिंगर्स ऑफ द हैंड कुड मूव फ्रीली. हाउ डिड शी सजेस्ट द हैंड शुड बी ट्रीटेड? उसने क्या सजेस्ट किया था हाथ को का इलाज कैसे करना है. शी सजेस्टेड दैट द हैंड शुड बी बेस्ड एंड कवर्ड. इट इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर. इन द एंड आई वुड सजेस्ट यू टू काइंडली consult your subject teachers and ask them to send you first 3 questions and first 5 words meaning and sentences. Thank you very much. Take care. Bye bye. चलें सर.